Hello, it's me. Hello, hello, hello. We are finally here, the finale of second season of the Funny Podcast. Till now, we've tried to keep it very bizarre, but I swear to God, it's still real. And hoping for the same thing for today's episode. Once again, this particular podcast is being brought to you by me, but in support of the India Film Project and Anchor's podcast lab, a brilliant cohort where a lot of new aspiring podcasters are creating brilliant content. You should definitely check them out. And yep, I mean, I am excited. To be very honest, I'm very excited about finishing up the season because I didn't know if I could even make it through 20 episodes. But here we are. No worries, no harm, no foul. We've had our ups and downs, overcome it. And now, just one last tale for me to share before I take a hiatus from podcasting. So, this particular aspect, it can be an incident, it can be an experience, it can be a lifelong lesson or a learning or a continuous learning that I've had. Because you've heard a few of my stories which are revolving around, let's say, vehicles. I started off by ranting on how anything that takes you from point A to point B is called a gadi. It's not specifically a car. You can check that in season 1, episode 4. Then I've spoken about a lot of gadis in general throughout season 1 and 2, wherein I have ridden them, I have been a passenger, I've just looked at them. I mean, yeah, a huge part of my life. I mean, without motor vehicles, I don't think any of our lives would make any sense. We are completely dependent on it, no matter what इकोनॉमिक फाइनेंशियल सोशल बैकग्राउंड भी आर फ्रॉम. कुछ ना कुछ तो होता है. कुछ नहीं तो ट्रक के पीछे तो बैठे ही हो गए. तुम लोग ट्रक के पीछे नहीं बैठे या मैं बैठा हूँ. Just it's too sad कि we might not be able to get that episode in this season. But again, I'm back to my favorite inanimate object, which is gadi. Of course, I'm kidding. My favorite inanimate object is a condom. But yeah, gadi is a close second. So when we talk about this particular thing, that, when we talk about being in a passenger seat or being a rider, you or a driver, you need to understand that there are certain things in this world which need to be followed, and that is what we call rules or statutes or law. ऐसे ही कुछ words हैं. And recently an incident took place which brought me under the light to gain some perspective about these rules and laws. So one of my flatmates, a couple of weeks ago, he had an accident, a road accident, where he was on a scooter, and another dude, very young, a little irresponsible. Why I say a little is because even my friend was a little irresponsible. So both were irresponsible on their own grounds. But while returning home, my friend, he got banged head on with this guy on a motorcycle, a very expensive, fast motorcycle. And he must have been in 100 or 110. So he had an accident, and my friend had a few injuries. And the other person had a lot of injuries, went into straight into surgery. Not get into details, but I feel like this is something that happens when we are
being a little irresponsible. Now, irresponsibility just does not occur when you are over speeding or when you are not wearing a helmet. In general, we on a daily basis break a lot of traffic rules, and traffic rules is what I'm going to talk about today. There are a lot of things that you have to understand before you get on the road. That is why getting a license is a very important thing. I still am trying to get one, but the point is, when you are driving, when you are riding, there's a particular behavior associated with it. You have to act a certain way, because एक तो तुम्हारी गाड़ी महंगी होती है. Trust me when I say this, because recently I went to a Honda showroom to get my Activa serviced, and they also deal with it, so they sell also. And I asked them, वहीं पे कोई CD100 और पैशन टाइप की कोई बाइक थी, जो कि मतलब वो बेसिक बाइक्स जो डोमिनोज वाले डिलीवर करने के लिए यूज करते हैं. सो मैंने उनको पूछा कि कितने की है, एंड ही सेड 90,000. आई वाज लाइक व्हाट द फक, पैशन इज नाउ 90,000 रुपीज. फिर मैंने उसको बोला कि ओके, ये गियर वाली गाड़ी है, हो सकता है इसलिए महंगी है. सो आई पॉइंटेड हिम आउट टुवर्ड्स अ होंडा डियो. डियो जिनको नहीं पता इज अ स्कूटर, नॉन गियर. मैंने बोला वो कितने की है. ही सेड इट्स अ न्यू मॉडल, 85,000. मैं बोला यार क्या है ये. देन क्योंकि मैं एक्टिवा चलाता हूँ, मैंने उनको पूछा कि एक्टिवा कितने की है. ही सेड वो भी 85,000 की है. मैं बोला एक सेकंड, सेकेंड हैंड एक्टिवा 20,000 में मिलती है, फर्स्ट हैंड एक्टिवा 85,000 की. ये 65,000 का भेदभाव कहाँ से आ गया. मतलब सेकेंड हैंड है ना, इट्स जस्ट एक इंसान ने कुछ साल चलाई और फिर बेची है, तो फिर क्यों. एंड दैट्स व्हेन इट हिट मी कि ऑटोमोबाइल इन जनरल इज अ वेरी precious, expensive asset. And when you have a very precious, expensive asset, you should be careful with it. So those who drive rashly, those who buy super bikes or big hogs, and they just go 120, 130 in the tiniest stretches of roads, please don't, because it happens. I mean, I have spoken about it before as well, that I had an accident. Okay, I haven't spoken about it. So once I had an accident, and गिरने के बाद I did not pass out. So luckily when I got up, I just looked around. मेरे स्कूटर की मिरर वगैरह टूट रही थी, तो मैं चेक कर रहा था कि कितना डैमेज हुआ है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि गाड़ी महंगी चीज होती है यार. So whenever you are driving something, whenever you are riding something, you need to be a little careful. But we don't. We do not do that because we follow the YOLO rule. YOLO, for those who don't know, is short for you only live once. In my opinion, YOLO should be you are only Loda once. Because if you die, you die. And when you follow YOLO, you are probably gonna die with a dick move. So don't do that. एंड योलो की वजह से लोग बोलते हैं कि यार लेट्स लिव ऑफ द एज. यू नो व्हाट, यू कांट लिव ऑफ द एज, बिकॉज वहां पे घर नहीं बन सकता, नीचे जमीन नहीं होती. एंड इंडिया में ट्रैफिक रूल्स की जो माँ बहन होती है वो कहीं और नहीं होती. नोबडी एल्स कैन क्लेम कि देयर ट्रैफिक रूल्स आर बीइंग वायलेटेड बेटर देन अस. बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी स्टूपिड इंस्टेंसेस जहां पे मतलब तुम कुछ भी कर सकते थे बट तुमने कुछ और किया. द फर्स्ट इंस्टेंस इज, अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन, ये चीज तो साइकिल के साथ भी करते हैं लोग. यू नो दैट योर vehicle has brakes, right? So when you have to stop your vehicle, just
hit the brakes and slowly gradually it will stop. बट लोगों को क्या करना होता है, उनको फ्लिंटस्टोन बनना होता है, वो अपने पैर जमीन में गाड़ देते हैं कि अब तो पैर से ही गाड़ी रुकेगी. वाई? क्यों क्यों? बिकॉज दे ट्रस्ट देयर फुट मोर देन टेक्नोलॉजी. क्या मजा आता है यार. एंड दिस इज अगेन स्टूपिड बिकॉज यार पैर टूटता है उससे. तुम 40 की स्पीड में जा रहे हो और तुमने पैर लगा दिया जमीन पे, पैर पीछे जाएगा. फिजिक्स है वो. दोनों जांघों से तुम डिसलोकेट हो जाओगे, फिर घसीटते रहना खुद को. ये बहुत लोग करते हैं यार. आई मीन जस्ट हिट द ब्रेक्स. और स्कूटर में तो दो दो होते हैं यार तुम्हारे दोनों हाथों में, जस्ट दबा दो हल्का हल्का, रुक जाएगी गाड़ी. बट नहीं करना होता. दे प्रेफर देयर लेग्स. दे रियली थिंक दैट पैर से गाड़ी ढंग से रुकेगी एंड रुकते साथ बैलेंस में आ जाएगी. ब्रेक से करेंगे तो फिर पैर नीचे रखने में रिलैप्स ना लैप्स ना आ जाए, लैग ना हो और हम गिर ना जाए. मतलब वाह. अनदर ट्रैफिक रूल, आई मीन आई थिंक दो चीजें इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को बनानी बंद कर देनी चाहिए. बिकॉज वो तो यूज में आती ही नहीं है कभी. आई मीन व्हाई वुड यू यूज इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्किंग लाइट्स. पार्किंग लाइट्स जिनको नहीं समझ में आ रहा, बेसिकली यू क्लिक ऑन द पार्किंग लाइट एंड बोथ योर इंडिकेटर्स स्टार्ट ब्लिंकिंग, जिससे कि पीछे आने वाले को या फिर सामने से आने वाले को ये पता चल जाए कि ये गाड़ी स्टेशनरी है, ये हिल नहीं रही. लोग कहीं भी रोक देते हैं. लास्ट ईयर आई वाज गोइंग, वी वर हाउस हंटिंग एंड आवर ब्रोकर, शी केम इन अ कार एंड इट वाज अ ट्राई सेक्शन ऑफ रोड्स. बीच तिराहे पे उसने गाड़ी रोक दी और उतर के आ गई. बोलती है आप लोग कब से वेट कर रहे हो? मैं बोला भाई गाड़ी तो हटा. बोलती हाँ वो मैं साइड में कर दूंगी, बट आप बताओ. उसने गाड़ी रास्ते में ही रोक दी और रास्ता ब्लॉक हो रहा है. वाई वुड यू डू दैट? आई मीन पार्किंग लाइट्स की कोई इज्जत नहीं है. और बिकॉज पार्किंग लाइट्स की कोई इज्जत नहीं है, पार्किंग लाइट्स से लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता और बेसिक कर लेते हैं. लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द इंडिकेटर्स फॉर दैट मैटर. चाहे कार हो चाहे टू व्हीलर हो, इंडिकेटर कोई यूज नहीं करता. सबको अपने हाथ में ही भरोसा है. कार में तो मेरे को समझ में भी नहीं आता कि चलो ठीक है, इफ यू आर टर्निंग राइट तुम हाथ दिखा सकते हो. लेफ्ट साइड के लिए क्या करोगे तुम? लेफ्ट साइड वाले को बोलोगे कि भाई हाथ दिखा दे. बाइक्स के साथ भी यही होता है. इंस्टेड ऑफ इंडिकेटर दे विल ट्रस्ट मोर ऑन देयर ओन हैंड्स. इंडिकेटर इज अ लाइट. अंधेरे में तुम अपना हाथ दिखाओगे, किसी को लौड़ा नहीं दिखेगा, हाथ कट जाएगा. बट दैट इज वेयर इंडियन लॉजिक किक्स इन. जब हम लोग हाथ दिखाते हैं, इट ब्रेक्स द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. तुमने किसी भी इंटरसेक्शन पे, किसी भी क्रॉसिंग में, किसी भी टर्निंग में इंडिकेटर ऑन नहीं किया, चलेगा. तुम जाके किसी से टकरा जाओ, चलेगा. गलती तुम्हारी है, चलेगा. क्यों? क्योंकि टकराने से पहले तुमने हाथ आगे कर लिया. तो अगर सामने वाला बोलेगा कि भाई इंडिकेटर दे के क्यों नहीं आया, हॉर्न क्यों नहीं बजाया, तेरी गलती थी, तू तेज चला रहा था, द आर्ग्यूमेंट क्लोजेस विथ ओनली वन स्टेटमेंट फ्रॉम द पर्सन सेइंग हाथ तो दिखाया था ना. एंड दिस इज समथिंग दैट हैपेंस विद पेडेस्ट्रियंस एज वेल. क्योंकि इंडिया में जेब्रा क्रॉसिंग किसी को नहीं समझ में आता. जेब्रा क्रॉसिंग्स आर देयर कई जगहों पे टू मेक श्योर दैट यू क्रॉस फ्रॉम दैट पाथ. एंड उस पाथ के आसपास, बिकॉज देयर इज अ जेब्रा क्रॉसिंग, कार ड्राइवर्स, बाइक राइडर्स, दे आर ऑल सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल. लेकिन हम कहीं से भी रास्ता क्रॉस कर लेते हैं. एंड आर पर्पस इज कि रास्ता क्रॉस करते वक्त अगर गाड़ी आ रही है तो हाथ दिखा देना. गाड़ी की जिम्मेदारी है कि वो रुके. लाइक इफ एन इंडियन गोज टू जर्मनी और वो ऑटोबान में भी जा रहा है, जहाँ पे गाड़ियाँ 140 150 की स्पीड में नॉर्मली चल रही हैं,
वहां पे भी उसका लॉजिक यही है कि मैं हाथ दिखाऊंगा तो एक फरारी को आके रुकना ही पड़ेगा। ये हाथ दिखाने वाला कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट रिडिकुलस थिंग, बिकॉज इंडिकेटर दिखाया और ठुके तो तुम बोलोगे कि यार हम इंडिकेटर दिखा रहे थे, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? उसने बोला कि इंडिकेटर क्या होता है, नहीं दिखता किसी को, हाथ क्यों नहीं दिखाया? आई मीन लाइक हाथ इज एवरीथिंग। एंड इसीलिए मैं बोलता हूं कि यहाँ पे तुम कुछ भी कर लो, अगर तुमने हाथ दिखाया है, आई एम प्रिटी श्योर अगर कोई किसी इंसान को गोली मारेगा और गोली मारने से पहले हाथ दिखा देगा, वो भी जस्टिफाइड है। एक आखिरी चीज जो इंडिया में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को नहीं बनानी चाहिए, या फिर अपनी गाड़ी में ऐड नहीं करना चाहिए, उनका खर्चा भी बचेगा, इज हॉर्न्स। हॉर्न बजा मतलब, ट्रस्ट मी आई एम सेइंग दिस बिकॉज मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ। मैंने शायद 2 साल में एक बार भी हॉर्न नहीं बजाया, मुझे तो पता भी नहीं कि मेरी गाड़ी का हॉर्न चलता है कि नहीं। क्यों करना हॉर्न भाई, किसको करेंगे? हॉर्न करेंगे, कोई बोलेगा कि नॉइस पोल्यूशन है। हाउ द फक डज दैट मैटर यार, तुम ठुक जाओगे। ओवरटेक करने से पहले कोई किसी को हॉर्न नहीं मारता, वो सीधा कर लेते हैं। ऐसे ही मैं एक दिन जा रहा था और साइड से एक सुपर बाइक गुजरी, जूम, वो जूम ही उसका हॉर्न था। तो मैंने बोला ठीक है भाई। दूसरी बार एक और गुजरा, मैंने फिर से सुना जूम, 3 4 ऐसे, तो मुझे एक आइडिया आ गया कि ओके ये लोग एक बाइकर ग्रुप है एंड दे आर गोइंग दैट वे, तो ठीक है। बट मेरे दिमाग में पहली चीज क्या थी, ना इसने हॉर्न बजाया, ना इसने कोई सिग्नल दिया, वो भगाए जा रहा है। एंड जब भी इंडिया में कोई गाड़ी भगाता है, मतलब तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम बस साइड में कहीं बैठे हो, नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, अगर किसी ने तुम्हारे सामने गाड़ी तेज चला दी, तुम्हारे अंदर से एक इनवॉलेंटरी रिफ्लेक्स निकलता है कि ये ठुकेगा साला। एंड ये ठुकेगा साला happens almost all the time. And I'm not making this up. This is exactly how my friend got hurt. So, yeah, traffic rules are not fuck all, but they've been made into it. Follow traffic rules. You'll at least stay alive to listen to this episode and any other episodes if I may release after this. But that was all from me for second season. Thank you so much for being here with me throughout the journey. Uh, Listening to my podcast, because it's actually a little exhilarating right now, because when I was doing the first season, I guess ये अगल बगल पड़ोसी देख रहे थे मेरी पॉडकास्ट को। इंडिया से 95-96% पॉपुलेशन थी, पाकिस्तान से कुछ थे, और बाकी मेरे जो दोस्त यूएस जर्मनी में थे उनका थोड़ा था। बट अब it's really fascinating to see that there are 56 different countries जहाँ से लोग they tune in and they listen to this podcast. So thank you so much. I mean, it's all the validation I could seek. Uh, Thank you for letting me complete the second season. A huge shout out to the Podcast Lab by India Film Project and Anchor by Spotify. Thank you to my, चलो thank you मतलब कितनों को मैं thank you बोलूँ, because throughout this season a lot of people have helped me complete or keep going on with the episodes. So thank you all. I'll see you very, very soon. Stay safe. Bye bye.